SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you all are happy and healthy in your home, and I hope you all are doing very well in your studies. So, this is your mentor Sonisati, and today with me, we are going to learn about our chapter number 5, and the name of our chapter is Creating Tables in MS Word. So, in previous classes, according to our concept and the explanation, we have learned that MS Word is used to type documents. But do you know we can also insert tables and charts in MS Word? So today we are going to learn about the same in this class. So without any delay, let's start the chapter. In this chapter, we will learn how to create a table, that means creating a table, how to delete a row or a column. Again, row and column are the concept of a table. Now merging cells, aligning the text in a cell and adding borders and shade to the table. How to insert rows and columns. Change the row height and column width. Splitting the cells, moving and resizing a table. Calculations in a table. So, before that, let's understand software and introduction. So, software introduction. A table is an organized arrangement of data, text, number, pictures and other objects. Basically, एक table क्या होता है जिसमें हम organized arrangement manner में हम अपना data रखते हैं. Okay, which consists of number of rows and columns, जिसमें बहुत सारी rows and बहुत सारी columns होती हैं. Table is used for various tasks such as presenting text information and numerical data also. A series of vertical cells is known as a column. So, जो हमारी vertical cell की series होती है उसे हम कहते हैं column. Okay? And whereas a series of horizontal cell, that means this, okay, is known as row. The intersection of row and a column, that means intersection of a row and a column, that means this is a cell. These are the cell and it is the single unit of the table. That means table is made up of so many cells. Okay. Now there are many ways in which a table can be created in MS Word. The general way to create a table is to select from the insert tool from the standard toolbar. So बहुत सारे ways है हमारे पास अगर बहुत सारे ways है हमारे पास ताकि हम insert कर सकें table को in our MS Word. But here we are understanding the standard rule. So that is to go standard toolbar and then use insert tool and after that insert table. So here we are understanding how to create a table. Firstly, we have to follow the steps to create a blank table. Step number 1 is place your insertion point, that means the blinking line in the document where you want the table to appear. जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे insertion point के according आपको place करना है. Then step 2 is go to the insert tab, table group and table command. Then आपको insert tab में जाना है. This is insert tab. Then table के group में जाना है. That is shown here. Okay. And then we have to select table. Okay. Select table command and then you can choose here. Step 3 is hold mouse over the diagram squares to select the number of columns. So basically hold and drag according to the column and the cells you want in your table. Step number 4 is click your mouse and the table appears in the document. And then आपको mouse click करना है, table आपके document में appear होगी. Now we have another way, that is step number 1 click insert then table insert table. तो सबसे पहले आपको वो वाला स्टेप फॉलो करना है. अगर आपको इसके अलावा चाहिए तो दूसरा वे क्या है, इंसर्ट टैब पे जाइए, देन टेबल पे जाइए, देन इंसर्ट टेबल पे जाइए एंड एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. देन टाइप द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो वो डब्बे में उस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है.
number of rows and number of columns को लिखना है and then click OK and you will see that the table has been appear in the document. Now you can now place the insertion point anywhere in the table to add text and उसके बाद आप continue कर सकते हैं कहीं पे भी insertion point डालकर text को add करने के लिए. Here you are provided with a fact.com that you have to do, that you have to learn and understand by yourself through the reading of this chapter. Now to convert existing text to a table. So again we have one more way to create a table, but here we have existing text. That means आपके पास जो existing text है already, जो पहले से ही कोई text है उसको आपको table में convert करना है. So here you have the steps. Step number 1 is select the text you want to convert. Firstly आपको select करना है वो text को. Then step 2 है go to the insert tab and then table group. उसके बाद आपको insert tab पे जाना है, again table group पे जाना है. Step 3 है convert text to table from the menu. Then आपको convert text to table option में जाना है. See, यहाँ तक तो आपको step पता थे. Then इस topic पे इस option पे आपको जाना है. Then choose one of the option in the separate text or section. So उसके बाद आपको एक option choose करना है separate text at section. So basically आपको इस वाले ग्रुप में जाकर देखना है, आपको बताना है कि पैराग्राफ सेपरेट होनी चाहिए या फिर कॉमा से आपने सेपरेट किया या फिर टैब से. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटर्न राजू कॉमा महेश कॉमा सीता and in the another line I have written Pinky, Mohan, Sohan. And now they are separated with comma. So you have to select the text, then you have to go to the convert text to table, then you have to go to the separate text add, and then you don't have to select paragraph. You have to select then comma and then OK. In a similar manner, you people can select anything like paragraph, tabs, commas, other. So आपने जिस तरीके से आपने इनको separate किया है अपने text को for making a table, then you have to select the same. Here we are provided with a table. This is how a table look like. Okay. Now how to insert rows and columns. So basically हम अपने document में अपने table में rows and columns को भी insert कर सकते हैं. While creating and making entry in a table, you need to add columns, rows in between. So basically जब आप entry करेंगे कभी गलती हो सकती है या फिर आपको कुछ और ऐड करना है, then you understand कि अरे आपने एक कॉलम कम बनाया. So it may be possible, it may be a problem can be arisen that you have to add the column and rows in between. So what you will do? Now we understand that Word provides the facility to add new columns to the right or the left of any existing column and insert rows above or below the selected row. आप selected row के above या below में एक और row ले सकते हो और column के left and right में भी कोई ना कोई extra new column ले सकते हो. So we have some steps to do this. So step number 1 says आपको cursor place करना है जहाँ पे आपको rows और columns को insert करना है table के अंदर. Then 2 new table tools tab will appear called design tab and layout tab. So basically उसके बाद आपको table के अंदर जाने के बाद आपको design tab and layout tab open हो जाएंगे automatically. Then step 2 says select the layout tab. That means step 2 है कि आपको layout tab में जाना है, then आपको rows and columns में जाना है, then आपको insert rows करने के लिए, rows को insert करने के लिए two relevant options are there, that is insert above and insert below. So उस row के above या below डालने के लिए आपको two options given होंगे, that is insert above or insert below. And to insert column, the options are insert left or insert right. Here we can see add a new row directly above the selected row. Insert above. Okay. Then insert below. Insert left and insert right. Add a new row directly below the selected row, that is insert below. Add a new column directly to the left of the selected column, that is insert left, and add a new column directly to the right of the selected column, that is insert right. Now step 3 is the insertion of rows and columns can also be done by clicking the right mouse button while your cursor is inside the table. So basically आप यहाँ पे अगर कर्सर रखें and then आप वहाँ पे right mouse button दबाएं, then you will see
कुछ ऑप्शंस आते हैं जिससे हम इंसर्ट कर सकते हैं रोज या कॉलम्स भी अपने टेबल में. द इंसर्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज शोन इन द फिगर बिलो लाइक दिस. हियर 5 and 6 के बिटवीन में आप देख सकते हैं एक ब्लैंक रो हमने क्रिएट की है. अ ब्लैंक रो अपीयर बिलो roll number 5. Now this is the table, this is the table. Similarly, you can insert column to your table. See how? Again, we can see that this is the new table. A blank column appear right to the English column. So basically right click करेंगे, then you will get the option that you can click and then you can get the column. How to delete a row and column? Okay, so insert कर दिया, but अगर need नहीं है, extra हो गए हैं, so what you will do? You will delete them. Okay, so to delete them, you have to follow the step. The step number 1 says cursor should be placed in the table from where you want to delete a row and a column. So कर्सर प्लेस होना चाहिए टेबल के अंदर जहां पे आप चाहते हैं कि आपको रो और कॉलम डिलीट करनी है. Then step 2 is click on the layout tab. Then you have to go to the delete from the rows and column group. So again layout tab में जाएंगे, rows and columns group में जाएंगे, then delete पे जाएंगे, एक menu आएगा and then उस menu में आपको delete rows and delete columns. Entire row columns will get deleted. तो then आपको इसे क्लिक करना है and you will see that entire row या फिर entire column delete हो जाएगी. Okay, so this is a row having roll number 6 is being deleted. See 1, 2, 3, 4, 5 and 7. Okay, now we have change the row height or column width. So again we can do formatting in the table also. So again हम यहाँ पे height और column की width भी change कर सकते हैं. Row height, okay, and column की width को भी change कर सकते हैं. See, step number 1 is select the row and column to change the height or width, and then step 2 is click on the layout tab. So सबसे पहले वो वाली row और column को select करो जिसको आपको change width या height, and step 2 is click on the layout tab. Then just go to the layout tab. Then step 3 is from the cell size group में to increase or decrease the column width or row height, use the increase decrease arrow और type the values in number. So basically आपको वहाँ पे again customize करना, details fill करनी है, that is कि आपको कितना increase चाहिए, कितना decrease चाहिए in the width and as well as in the height of the row. Now you can also get the table properties dialog box by right clicking the mouse button or click on properties from the table group. So basically आपको table properties भी दिख सकती है, मिल सकती है by just right clicking on the table group and then properties. Okay, the table properties dialog box will appear and click on the column tab and then जैसे आपको table properties दिखेंगी आपको वहाँ पे click करना है column tab. Okay, and then you can see the all the properties of our table. Now we have select the preferred width in the box. Now you have to select the preferred width जो आपको चाहिए वो वाली width of the box in the box. Okay, increase or decrease the column width with the help of tab or simply enter the values in numbers, then click on OK. Now same procedure can be followed to change the row height by selecting row option. So same चीज आप row की height के साथ भी कर सकते हैं by just selecting the option of row. Okay, the table after changing the row height of first row and column width of the first column. See here, we can understand this. Now when the table is completed, desired changes can be made if required. So अगर आपकी table complete हो जाती है, then again आप required changes कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप table complete होने के बाद अपनी changes नहीं कर सकते हैं. You can copy the cell content from one cell to another or rewrite the text. So आप लोग उसको कॉपी कर कर दूसरे सेल पे भी लिख सकते हो, लाइक एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल में भी लिखवा सकते हो एंड रीराइट भी कर सकते हो. लाइक अगर आपको टेक्स्ट को रीराइट करना है कि ये गलती हो गई, मुझे इसके अलावा कुछ और लिखना था, सो वो भी आप कर सकते हो. To copy the cell content, follow the given steps. Very first step is select the cell that you want to copy the content. Press Ctrl C to copy the content and then place the insertion point in the cell where you want to paste the content and then press Ctrl V. So basically सबसे पहले आपको जिस content को copy करना है आपको उस cell पे जाना है, then you have to press the shortcut key of copy, that is Ctrl C, Ctrl plus C. Okay, so Ctrl C, and after that in which you want to copy that content you have to go to
that cell, and then you have to press Ctrl V to paste it. Okay. In a similar manner, you can do so many copy and pasting activity. Now then we have splitting cells. Splitting a cell means dividing the selected cell into separate cells. So basically we know splitting means तोड़ना. Okay. So अगर आप एक सेल को डिवाइड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, that means you are dividing the selected cell into separate cells, so many cells. Now we have some steps to split. Now we have some steps to split the cell. First is select the cell you want to split, then go to the layout tab, then click on the split cell that is present on merge group. Now split cell dialog box will appear. So उसके बाद आपके पास split cell का dialog box appear होगा and then you have to enter the number of columns and rows in a split cell dialog box. तो आपको कितने चाहिए, एक सेल के कितने सेपरेट टुकड़े चाहिए, आपको उसमें लिखना पड़ेगा नंबर. Then you have to click on the OK. The cells will get splitted. See, this is the original one, and then after splitting you can see here we have two columns. Okay. After that we have merging cells. Again सब हमने splitting किया तो हमने तोड़ा. Now merging is जोड़ना. Okay. So separate cells को मिलाकर एक new cell बनाना. Sometimes data is split in numerous segments of a cell and you want to combine it in a single cell. That means कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारे सेल होते हैं या फिर एक सेल को हमने बहुत सारे सेल में तोड़ दिया है, उसे कंबाइन करने के लिए we have to understand the merging. Okay. To give it a better look, merging the cells provide a way to consolidate data in one cell. So basically you can merge them and you can make it a one cell. To do the same you have to understand the steps. The first step is select the rows and columns you want to merge. सबसे पहले वो rows and columns को आपको select करना है जिनको आप merge करना चाहते हैं. Then step number 2, click on the layout tab. Then go to the merge cell. From the merge group, the selected cell will get merged. Okay. So आपको merge cell पे जाना है. Merge group के अंदर से जो भी आपने cell select किए थे वो merge हो जाएंगे. For example, this has become this. Understand? Now we are moving towards our next topic, that is moving and resizing a table. Moving means changing the position and resizing means changing the size, like big, small. Okay. So the size of the table can be increased or decreased if needed. आप table का size increase or decrease भी कर सकते हैं अगर requirement है. When we click on a table, a plus sign at the left corner appears. It is known as table move handle. So जब हम table में click करते हैं, table में कुछ formatting कर रहे होते हैं, then this kind of structure looks at the corners. That is known as table move handle, or this is known as table resize handle. So if you want to move the table, so you can understand here that you have to just to move a table, place the mouse pointer at the table move handle until a plus sign get appear, and then you have to drag at any part of the document and mouse button. कुछ जैसे आप release करेंगे, you will see that the table has been changed, its location has been changed, and you will see the table is moved to a new place. And here this is a table's resize handle. So a small hollow square at the right corner of the table पे जो आपके पास एक hollow square है छोटा सा, उसे हम कहते हैं table resize handle. So with the help of table resize handle you can change the size, you can change the resize of table. So to resize the table, the pointer is placed at the table resize handle until a double headed arrow appears. So आपको वहाँ पे रखना है जब तक आपको एक double headed arrow ना मिले. Okay. और आप जैसे वहाँ पे रखेंगे, in 2 or 3 seconds you will see that arrow and the table boundary is dragged, and then you have to drag it. Okay. And as we drag, dotted line appears to indicate the size. जब आप इसको ड्रैग करते हैं डॉटेड लाइन से आपको ये शो होता है कि आपका डेटा पहले कैसे था और अब आप कितना उसे रिसाइज कर रहे हैं. द माउस बटन इज रिलीज्ड व्हेन द डिजायर्ड साइज इज ऑब्टेन्ड, और आपको उसके बाद ड्रैग करने के बाद उसे तब रिलीज करना है जब आपको लगेगा कि आपको इतना ही साइज चाहिए, आफ्टर द डिजायर्ड साइज. नाउ resizing of a table can also be done using the auto fit option. So टेबल का रिसाइज एक ऑटो फिट ऑप्शन से भी हो सकता है. सी हाउ. So for that we have to follow the steps. Step number 1 is go to layout tab and then
click on the auto fit from cell size group. Cell size group में जाना है, that means layout tab, then you have to go to the cell size group and then you have to go to the auto fit. See, this is a cell size group and then you have to go to the auto fit here, and then you will see following are the auto fit options. So see how we have provided with the three options. So which are that? Auto fit to content, that means content से auto fit होना. For example, आपका cell इतना है and आपने content सिर्फ इतना लिखा है, so the column will be resized as this. So that is known as auto fit to the contents. The columns width is adjusted according to the text entered. Now auto fit to the window, the table gets adjusted according to the margin set on window. So जब आपके पास विंडो की बात होगी तो आपके जो टेबल है वो एडजस्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मार्जिन ऑफ द विंडो. ओके, हियर वी आर प्रोवाइडेड विद ऑल द possible options. Okay, all the possible options. So see here, auto fit to content will look like this and auto fit to window will look like this only. Okay, see, this is like content को auto fit कर रहा है, but this is the page and we are leaving some page. Okay, we are leaving the area. Here auto fit window will cover all the area. Now we have aligning the text in a cell. So we all know what is aligning, alignment. That means आपका जो टेक्स्ट है वो मार्जिन से, बाउंड्री से कितने दूर है और किस काइंड ऑफ है, लाइक किस तरीके से लिखा है, लेफ्ट में अलाइन है, राइट में अलाइन है, टॉप में अलाइन है, बॉटम पे अलाइन है. ओके, so as you enter the text in a cell, it gets aligned. Alignment of a text refers to the positioning of the text in a cell. एक सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा आपने, या फिर ये डॉक्यूमेंट केस में भी सेम है, जब आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखते हैं, जब हम उसका अलाइनमेंट देखते हैं, उसकी पोजीशन देखते हैं, तो उसे भी हम अलाइनमेंट ही कहते हैं. अगेन अगर हमारे सेल के पास अगर हमारे सेल के पास कुछ कंटेंट है, कुछ टेक्स्ट है, उसका भी अलाइनमेंट हमारे पास प्रोवाइडेड है. By default, text is aligned to the top of the cell. The text can be aligned in the following ways. Top left, that means top and then left. So align text to the top left corner of the cell. So it will be like this. See, this is the alignment to the top left. Now top center will be look like this. Top right. Okay, top right means align text to the top right of the corner. So top and then right corner. So this will be like this. Okay, and center, top center वाला center text जो कि हमारे डब्बे के बॉक्स के सेल के अंदर सेंटर में होगा. Okay, now center left, center का left. Okay, center text vertically and aligned to the left side of the cell. Center, that means center text horizontally and vertically within the cell. And center right, that means बीच में और right में. So it will be center text vertically and aligned to the right side of the cell. Bottom left, that means here at the this place. Okay, bottom center at this place and the bottom right is this one place. Okay, these all are the just areas in which your content will appear if you will change the alignment. Now follow the given steps to align the text in a cell. So अगर आपको alignment change करना है, align करना है text एक cell के अंदर, so you have to follow these steps. First is select the text in the cell. So सबसे पहले आपके पास cell पे selected text होना चाहिए, like text जो हुआ है उसे आपको select करना है, ठीक है. Then you have to go to the layout tab and then you have to click on the desired option from the alignment group. Like alignment group में जाकर आपको जो भी desired आपकी alignment है आपको उसे select करना है and you will see the alignment will appear. Now we can also do calculation in a table. So to do the same we have to again follow some rules. We have to put the formula, we have to apply the formula here. So it is also possible to perform calculation of numeric data in a table. एक table के अंदर numeric data को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म सो मेनी मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, टू अप्लाई फॉर्मूलाज ऑन द डेटा इन अ टेबल फॉलो द गिवन स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक इन द सेल वेयर रिजल्ट इज रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले आपको उन पे नहीं जाना है जिनको आपको
कंप्यूट करना है, जिनको आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू गो टू द सेल वेयर यू वांट दैट योर आंसर शुड बी. Okay, then select the layout tab. After going to the desired cell, then you have to go to the layout tab, then you have to click on the formula from the data group. So go to the data group and then you have to go to the formula option. Then formula dialog box will appear, that will suggest a default formula. एक by default formula आपको suggest करेगा, that is equals to sum left in our case. So हमारे केस में is equals to sum left है, sum right भी हो सकता है, sum above, sum left भी हो सकता है. Okay, so then we can get the answer. You can select a number format using number format list box to display the result, or you can change the formula using formula list box. Then you have to click on OK button. So basically उसके बाद आपको formula को आप खुद भी prepare कर सकते हो. Here we have number format. So this is the by default formula is equals to sum left. Okay, then you have to number format. यहाँ पे आप number format में एक फॉर्मूला कस्टमाइज कर सकते हो, अपने आप क्रिएट कर सकते हो. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके. ओके, and you will see that you have got the final answer. Now this is the total of the row. Now we have update formula results. Sometimes there is a need to change or update the data. कई बार आपको नीड पड़ती है डेटा को चेंज या फिर अपडेट करने की. MS Word 2016 facilitate to update the formula result in cell. MS Word 2016 हमें ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी जिसमें हम अपडेट कर सकते हैं फॉर्मूला रिजल्ट को. See here we have some steps. Step number 1 says select the formula that you want to update. पहले आप सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मूले को जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं. You can select multiple formulas by holding down the control key. कंट्रोल की प्रेस और कंटिन्यू से करने से आप मल्टीपल फॉर्मूला को भी एक साथ अपडेट कर सकते हैं. Then we have step 2. Do one of the following. First is right click the formula then click update field. या तो आपको फॉर्मूला पे राइट क्लिक करना है देन अपडेट फील्ड क्लिक करना है, या फिर अगर आपके पास ऑल फॉर्मूला रिजल्ट आप चाहते हैं कि सारे के सारे आपके अपडेट हो, देन सेलेक्ट द टेबल विच कंटेन्स फॉर्मूला रिजल्ट. तब आपको पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी फॉर्मूला रिजल्ट है, एंड देन प्रेस F9 और उसके बाद आपको प्रेस करना है F9 एंड यू विल सी ऑल द फॉर्मूला रिजल्ट विल अपडेट. Now we have add borders and shade to a table. हम अपने टेबल पे बॉर्डर्स एंड शेडिंग को भी, इफेक्ट को भी, इनको भी ऐड कर सकते हैं so that our table looks more emphasized. To make the table more emphasizing, you can use different borders and shading styles. Follow the given steps for applying borders and shading. Step number 1 says select the entire table by clicking the table move handle. सबसे पहले आपको पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है बाय जस्ट क्लिकिंग द टेबल मूव हैंडल. देन क्लिक ओवर द टेबल एनीवेयर व्हिच विल मेक टेबल मूव हैंडल क्रॉस आइकन विजिबल एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल. देन आपको टेबल में कहीं पे भी क्लिक कर देना है ताकि आपका जो साइन है टेबल मूव हैंडल है वो क्रॉस आइकन विजिबल हो जाए लेफ्ट कॉर्नर पे. नाउ गो टू होम टैब देन पैराग्राफ ग्रुप. अब आपको होम टैब पे जाना है, देन पैराग्राफ ग्रुप पे जाना है एंड देन बॉर्डर बटन पे जाना है. सी दिस इज योर बॉर्डर बटन. A list of options is displayed. You can select any of the option available by simple clicking over it. आप किसी को भी क्लिक करके सिंपली उसे अप्लाई कर सकते हैं. Try to add and remove different borders like left, right, top or bottom by selecting different options. So different options होते हैं, आप सभी को उसे ट्राई करना है so that आपको वो समझ आ जाए. You can apply border to any of the selected row or column. You can try it yourself. Even आप रो और कॉलम को सिलेक्ट करके भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो. To delete the existing border, simply select no border option from the border drop down menu. और अगर आपको बॉर्डर हटाने हैं तो आपको वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर ऑप्शन में नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है. Now we have using border options. So see here we have some steps. First is go to the home tab, then paragraph group, then border button. Okay, and then select border and shading option available at the bottom of list of the options. So आपके पास जो पूरी लिस्ट है उसके बॉटम पे जो ऑप्शन है that is border and shading, उसे आपको क्लिक करना है. It displays a border and shading dialog box.
अब वो क्या शो करेगा आपको? बॉर्डर एंड shading dialog box. This dialog box can be used to set borders and shading around a selected table. और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एज पर योर चॉइस आप इसमें शेडिंग एज वेल एज द बॉर्डर अपडेट कर सकते हैं. Step 2 is click on the border tab that will display a list of border settings, styles and options whether the border should be applied to the text or paragraph or cell or table. अब आपको अगर उसे भी चेंज करना है so you can go to the border setting or we can say border styles option जो कि आपको टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ या सेल या टेबल पे अप्लाई करने हैं. Now we have step number 3. You can use preview section to disable or enable left, right, top और bottom borders to the selected table और row और column. जब आपका प्रीव्यू ऑप्शन चल रहा होगा, ओके, प्रीव्यू पीरियड चल रहा होगा, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपका बॉर्डर अच्छा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. Then we have step number 4. You can customize your border by setting its color, width by using different width thickness available under style section. Style section में जो भी आपके पास ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल कलर, width, इनको चेंज करने से आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं. See here, it is done in this picture. Now we have add shades to table. How we can add shades to our table. Follow the steps to add shades on a selected table or its rows or columns. Step number 1 says, select a row or column where you want to apply shade of your choice. सबसे पहले आप रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहां आप चाहते हैं कि आपका शेड अप्लाई हो. Then go to Home tab. होम टैब की पैराग्राफ ग्रुप में बॉर्डर बटन के बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन पे आपको जाना है. Then this will display border and shading dialog box as we all know like this. Okay, here we have pattern style, shade fill color, pattern color. Okay, application option and then preview section, and this is your shading tab. This is your preview section. Now step 3 says click shading tab. This will display options to select fill, color, style, whether this border should be applied to the text or paragraph or cell or table. Now step 4 says you can use preview section to have an idea about the expected result. आप preview section को भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप अगर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे देन आपका टेबल किस तरीके से दिखेगा. About the expected result. Once you are done, click on OK button to apply the result. जैसे ही आप complete कर लें, then आपको OK button click करना है to apply the changes. This is how we can do. Now we have some key points of this chapter. That is, MS Word provides a versatile feature of presenting the information in tabular form. MS Word हमें एक option facilitate करता है, एक feature that is presenting the information in a table form. Now a table is an organized arrangement of data which consists of number of rows and column. अब table क्या है? एक organized way है जिसमें हम data को represent कर सकते हैं with which consists number of rows and columns. Now MS Word has an option to insert rows below or above the selected row. Rows insert कर सकते हैं below or above the selected row. In MS Word, you can perform calculations as well of numeric data in a table. आप table के अंदर आप calculation भी कर सकते हैं. Then splitting a cell means dividing the cell into separate cells. Okay, so splitting cell means split करना, तोड़ना. आपका एक cell 4 cells में और 3 cells में divide हो, that is splitting of cells. And you can add borders and shade to the table as we all know, we just discussed. Then we have text alignment refers to the positioning of text in the cells of a table. अब text alignment क्या होता है? ये होता है जो हमारे सेल है उसके अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरह की पोजीशन में हमें विजन हो. Okay, now we have the back exercise of this chapter. So student, by here we have completed our chapter. I hope each and every concept of this respective chapter is totally clear to you.
If you found any query in any part of this chapter, please go once again to this video so that your concepts are totally clear. Now I will meet you in the next video with another amazing chapter. Till then, keep on learning, stay healthy, stay care. Bye bye.